wonderful wives and future wonderful wives to be, outstanding friends, marvelous daughters, adorable sisters, and nurturing mothers. This is the expansion of the word women. I honor you this afternoon for your unique roles, and on behalf of our director, Dr. Varna Prasad, and the Staff Welfare Committee of BSIP, as well as the convener and members of the Internal Complaint Committee, Dr. Vinita Fardia, Dr. Poonam, Dr. Neelan, and myself, Pauline, we extend our warm and hearty welcome to you all and our wishes on this International Women's Day. The BSIP fraternity also conveys its warm wishes to the female members of your families too. Do pass on our wishes to your mothers, sisters, and daughters and grandmothers too. The photos displayed behind are the painstaking efforts of Ms. Shivali Srivastava, which comprises of 90 photographs. They are the female staff of BSIP, showcasing the difficult circumstances under which they carry out the field work, braving the scorching heat, bone-chilling cold, prolonged travels, foregoing meals, and sometimes running out of water. Others are risky lab works with dangerous acids, and still others prolonged hours at desks and microscopes. Along with responsibilities at the work, she still plays a role at home of a loving mom, a caring sister, an understanding wife, and a lovable daughter. You have everything in you, and that's the reason why the world is celebrating you. No relationship is complete without a woman in the world. So, with this, I invite our dignitaries to kindly take their place on the dais, please. Dr. Varna Prasad, Director, we welcome you to the dais, ma'am. Professor Mukund Sharma, Senior Most Scientist of BSIP. Mr. Sandeep Shivaravi, Registrar of BSIP. And Mrs. Renu G, Senior Most Female Staff of BSIP. The word woman has been informally considered as an acronym with several expansions, but I find this the most apt one since it covers all the roles a woman plays. Firstly, W stands for wonderful wives. So, are we wonderful wives? I think it's time to introspect. And I think I would get the right answer honest answers if I asked your husbands. And if we are not good wives, I think we better take the necessary measures to mend our relationships because a wise woman builds her house, but the foolish plucks it with her own hand, says the Proverbs. O stands for outstanding friends. M stands for marvelous daughters. I think you're all familiar with the saying, I take permission from the male staff. If you do not take me otherwise, please do not mistake me. I would like to say a familiar saying. On a lighter note, I request you to take it. A daughter is a daughter all her life, but a son is a son until he gets a wife. So please take it on a lighter note. So really, we are very affectionate and marvelous daughters. M stands for marvelous daughters. And A stands for adorable sisters. Of course, they are friends for life. They share in our joys and sorrows. And N stands for nurturing mothers. And for this, indeed, moms need a big salute for all the sacrifices they do to nurture them. And what we are today, we owe them. If you recall the phrase, the hand that rocks the cradle rules the world. She has rocked your cradle to make you stand on your feet and to earn your bread.
and make a living. So what you are today is because of your mom. So our moms deserve due love and honor. And if you are not in good terms, I urge you to recollect that she gave birth to you with much pain, and therefore I request you to apologize and reconcile before it's too late and she's no more. Now I request Ms. Shivani to kindly assist in felicitating our two female staff which are on dais. Dr. Vandana Prasad, I request Dr. Mukul Sharma. On behalf of the entire male staff at Paleontologist, Director, as a collective representative of female scientific staff of BSIP. Thank you, sir. Now I request our registrar, Mr. Sandeep, to kindly felicitate Mrs. Renu G, senior most women staff of BSIP, who is collectively representing the female administrative staff of BSIP. Thank you, sir. As for the directives from the Ministry of Women and Child Development on celebrating International Women's Day, today, Tuesday, the 8th of March, under Azadi Ka Amrit Mahotsav, under the theme Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, we at BSIP are joining the rest of the world in celebrating the International Women's Day to celebrate women and their incredible achievements, to remember women who have sacrificed themselves for a better world, to reflect on opportunities and struggles women face in pursuit of social and economic progress, since women wield incredible power as mothers, leaders, decision makers, and workers. The celebration is to showcase and highlight women's achievements, initiatives undertaken for eliminating gender-based discrimination, and positive shift towards empowerment of women in science and technology. And coincidentally, BSIP is proud to have a woman as a director, thus pragmatically speaking, that we here at BSIP have eliminated gender-based discrimination. A big hand. Now I invite our director to kindly address the staff on Women's Day. Happy Women's Day to all. So today we are here to celebrate what women have achieved against all odds. And this is true for last 50 years or 100 years, and things were so difficult for women to come out from the social norms, from their restrictions at home. And over the years, so much has happened, so many things have happened, and now we are celebrating. Actually, the celebration जब था ये बहुत पहले होना चाहिए था ये, but last के 2-3 साल से अभी ये शुरुआत हुई है इसकी. और women's के achievement की बात कही जाए तो women's they themselves they are responsible for what they have achieved. ये उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके इरादे जो पक्के थे जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पे खड़ी हैं. अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि इस स्टेज तक आने में विमेन को कितनी कठिनाइयां हुई होंगी, कितनी परेशानियां हुई होंगी. जैसा कि मैंने कहा कि women's they themselves they were actually responsible for what they are doing today. उसमें बहुत कुछ रोल जो है बाकी साथियों का भी आता है, उनके पेरेंट्स का आता है, उनके भाइयों का आता है, उनके फ्रेंड्स का आता है, जिन्होंने कि सपोर्ट सिस्टम बने. जैसे हमें लगता है कि हम लोग कहते हैं विमेन पावर, विमेन सब कुछ कर सकती है, और ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन एक चीज समझने की बात है कि जो एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो कर पा रही है, वो है कि
women are, they are very firm in their decision, तो ले लेती है डिसीजन ले लेती है, पर कहीं ना कहीं काइंडनेस भी है, सहनशीलता भी है। ये चीजें जो है ये किसी भी वुमेन को कमजोर नहीं बनाती, स्ट्रांग बनाती है। उसकी वजह से वो एक एक जिसे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति का सामना करने लायक वो है। आप लोग घरों में भी देखते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है एंड यू सी योर मदर, योर सिस्टर एंड यू योरसेल्फ, आप किस तरह से उसका सोल्यूशन लेके आते हो, किस तरह से उसको, कैसे इसको हम इस प्रॉब्लम को इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको, तो ये जो चीजें हैं, ये क्वालिटी जो है ये मेरे में होती है। ये अफकोर्स अब तो मेरी को दिखाई देती है, और हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। They talk about their family, when they talk about their life, I could see that there is एक respect है, एक जिस तरह से वो उनके बारे में महसूस करते हैं, बात करते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। This is how society grows. फिर वही बात आती है कि क्या women strong कैसे हो सकती हैं। कई बार हमें लगता है कि कई बार विमेन, बहुत सारी विमेन है, उनको लगता है हम चीख के चिल्ला के गुस्सा करके हम अपनी बात मनवा लेंगे, हम क्योंकि हम विमेन है और हम बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं, अपनी बात को कहने के लिए हम उसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अगर हम फॉर्म हैं अपने डिसीजन में, अपनी बातें कहने में हम उसको पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है चीखने चिल्लाने की और रिएक्ट करने। चीखना चिल्लाना मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही, ये कोई बहुत इसमें बहुत हिम्मत और पावरफुल होने का वो एक वो नहीं दिखाई देता, तो बहुत कमजोरी की निशानी है, बहुत कमजोरी की निशानी कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। ये एक चीज है जो मुझे लगता है हर वुमेन जो है वो बहुत पावरफुल है वो, और वो अपनी बात को सहूलियत से कहकर भी अपनी चीजों को कन्वे कर सकती है। तो ये कुछ चीजें जो मैंने महसूस करी हैं। कई बार इश्यूज होते हैं ऐसे कि साइंटिफिक इश्यूज होते हैं उसमें, और कहीं कहीं पे लगता है कि हाँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो एज वुमेन हमको दिक्कत हो जाती है। की बात है, I started my career long back in 1994. So all my male colleagues ने बोला कि आप चल लोगे, आप चल कर पाओगे, आप काम कर लोगे। तो they were so much concerned about myself कि ये कैसे जाएंगे फील्ड पे, इतने डिफिकल्ट एरिया में कैसे टेरेन में रहेंगे। सो कहीं ना कहीं वो महसूस होता था कि हाँ, मतलब वाई वी आर, हमको इतना डिफरेंटली इस तरह से हमको हमारे साथ क्यों ये वो कर रहे हैं। मैं तो इन्हीं लोगों में से एक हूँ। तो वो महसूस खुद को होता था, उसकी कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि दिन गलत होने का हम इसका फायदा उठाए, हम बैठ जाए, हम डिफिकल्ट टेरेन में ना जाए हम। तो ये सारी चीजें हैं, और हमारे ख्याल से हमारे BSIP जितनी भी महिलाएं हैं, साइंटिस्ट हैं और स्टूडेंट्स हैं, सभी इन सभी में ये चीज दिखाई देती है कि सब कंधे से कंधा मिला के आगे चलने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक एक है, मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी इज वन थिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दीज डेज। दीज डेज क्या हमेशा से भी रहा है, लेकिन आप हमेशा देखो कोई भी किसी भी चीज की प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि वहाँ पे एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी को लेके आते हैं वो। और कि जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इंक्लूसिवनेस है, जेंडर इक्वालिटी है, सभी लोग हैं, हर सेक्टर के लोग हैं, कास्ट के कुछ नहीं, सब तरह के लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर काम करें, और डेफिनेटली वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, सोच फर्क होती है, लोगों की काम करने का जो स्टाइल होता है बहुत फर्क होता है, बहुत क्रिएटिव होता है वो, बिकॉज वन पर्सन इज थिंकिंग लाइक दिस, अनदर पर्सन थिंकिंग लाइक अनदर वे, एंड सबको लेके चलना, सबको इकट्ठा करके करना, तो ये एक चीजें होती हैं वो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं। सही मायने में हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है जेंडर इक्वालिटी, सभी मेल फीमेल सभी। अभी तो मुझे आधा पूरा आधा जो ऑडिटोरियम है वो सब हमें नहीं दिख रही है उसमें, तो ये हर कोई लोग आ रही है, क्या बात है वो। हरी जी, आपको मेन डे भी मनाना चाहिए। तो ये है, और जहाँ तक है वीक वुमेन होने का मतलब ये है कि बार बार मैं वही कहती हूँ
we have to be firm, we have to be like compassionate, we have to be दूसरों की जो किसी के भी दुख दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए विमेन में, तभी एक कंप्लीट विमेन कहलाती है ये। तो हम लोग आज विमेन की, वी आर नॉट हियर टू लाइक सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द विमेन, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द विमेन गुड। थैंक यू। और हम हिमाचल के बारे में बोलना चाहेंगे। इनसे मेरी मुलाकात 2004 में हुई थी एक फील्ड ट्रिप पे, एंड वो इतना इन्होंने जो है मेरे मन में, मेरे अंदर इतना ज्यादा इंस्पायर किया एज वुमेन, इतना इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि इनके अलावा कोई और जो है हम किसी और वक्ता को नहीं बुला सकते हैं। और जिस तरह की चीजें थी इन्होंने, वो भी हमारा करियर की शुरुआत थी उस समय, तो बहुत सारी चीजें थी। एंड शी यूज्ड टू टेल अस, लंबी लंबी बातें इनसे होती थी हमारी, और उन्हीं चीजों में ये कब हमें बहुत सारी सीख दे गई, ये शायद इन्हें भी नहीं पता होगा। तो लेट अस लिसन टू हेमा जी, and we are very happy. Hema ji, you are most welcome, and we are very happy to have you here on the stage. Thank you, ma'am, for sharing your views. Now, I request Professor Mukul Sharma to kindly share his views about it. Thank you. पहले तो मैं सभागार में उपस्थित सारी स्त्री शक्ति को नमन करता हूँ। ये आज एक की वजह से सभी मेरे साथी हैं, कुछ छात्र हैं। तो मैं देख रहा हूँ, और भी कुछ देर पहले पौलिन जी ने कहा कि करीब 90 लोग 90 स्टाफ मेंबर्स हमारे फीमेल हैं। और मैंने शिवाजी जी से पूछा कि भाई कितना स्टाफ है, जो स्टाफ के रूम पर है, तो पता चला 160 या 64। तो आप लोगों ने तो बाजी मार दी, आप 50% से ऊपर है। तो ये भी रिमार्केबल अचीवमेंट है मैनेजमेंट का। सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे इस वातावरण में सब लोग हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ये दिख रहा है कि इस साल की शुरुआत में भी हमारी महिला शक्ति ने और हमारे महिला छात्र ने बहुत अच्छा सुंदर पर्चा साइंस के लिए लिखा। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत देखते हैं कि सारे लोग मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब लास्ट फ्राइडे सवीना जी और पूनम जी आई थी, तब तक मेरे पास थीम का कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने कहा कि आपको कुछ बोलना है। तो मैं भी सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने ब्रीफली कहा कि जेंडर इक्वालिटी में बोलना होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ टाइटल बताने के लिए कहा, तो फिर सोच रहा था कि मैं क्या कहूँगा। फिर मुझे लगा नहीं अच्छा होगा मैं कहूँ कि आधी दुनिया। और आज जब मैं देख रहा हूँ इस कंपाउंड के अंदर वो आधी दुनिया आधे से ज्यादा बड़ी है। आधी दुनिया नहीं, आधी दुनिया। और फिर मैं सोच रहा था उसका टाइटल रखूंगा मीठा सच कड़वा सच। एक सच्चाई है, क्या कहते हैं कि हम आधुनिक समय में महिलाओं को कमतर आंका है इन लोगों ने, पर ऐसा हमेशा नहीं रहा। और खास तौर से इस भारतीय धरती के ऊपर ऐसा नहीं रहा है। हमने महिलाओं को बहुत ही सम्मान दिया है, और महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिला करके ये कार्य किया है। तो मैं बार बार पूनम जी से कह रहा था कि हमको क्यों कह रहे हैं आप बोलने के लिए, बेहतर होगा कि ये अवसर सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं को बोलना चाहिए इस पर आकर के। तो पता चला कि दूसरे वक्ता भी हमारे पुरुष साथी हैं। तो ये हम लोग के कंधों पर रख दिया गया है कि हम लोग महिलाओं के बारे में बात करें। और हमें कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, महिलाएं भी हमारे तरीके से हमसे ज्यादा अच्छी हैं कार्य के क्षेत्र में भी, और सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। हो सकता है कि हम एज ए पुरुष वर्ग के तरीके से हम एक ही जिम्मेदारी निभाते हैं, पर हमको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बहुत आयामी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और इसके बावजूद अगर वो कार्य कर रही हैं तो ये तारीफ की बात होती है। तो क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया था, आज सवेरे भी मैं सोच रहा था, आने के पहले मैंने थीम देखा है, अदरवाइज शायद हो सकता था मैं कुछ और सोच करके आता। तो आधी दुनिया कड़वा सच और मीठा सच, ये मैंने सोचा था। तो अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं तो इतिहास हमारा बताता है कि महिलाएं बहुत सशक्त थी,
और पुरुषों का साथ भी नहीं देती थी, उनको हमने हर जगह पाया भी है। हम अपने यहाँ से बात करते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं की, तो भी उसको रचने वालों में क्या कहते हैं, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा थी, जिन्होंने कि ईसा के पूर्व में दार्शनिक के रूप में ही नहीं, बहुत सारी ऋग्वेद की ऋचाएं भी रचने में उनका नाम माना जाता है। इसी तरीके से हम सब गार्गी के बारे में भी जानते हैं। गार्गी भी एक बहुत अच्छी दार्शनिक थी और वक्ता थी। हम ये देखते हैं कि जब कभी कोई पुरुष हारने लग जाता है तो स्त्री आगे बढ़ करके आती है और उसको हारने नहीं देती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है मंडन मिश्र की तरीके से। जब वो शंकराचार्य के साथ अपना शास्त्रार्थ करते करते हार गए थे, तब उनकी पत्नी, जो कि उस समय एक रटरी का कार्य कर रही थी, उसने कहा नहीं, अभी आपने इनको हराया और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे मेरे से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और जब आप मुझे हरा लेंगे तभी इनको हारा माना जाएगा। देखिए, मतलब स्त्री ने वहां भी आगे बढ़कर के पुरुष का साथ दिया, और पुरुष भी उनके बिना अकल्पनीय था और इनकम्प्लीट भी था। हम सभी सप्तती के बारे में भी जानते हैं, जब लड़ने पर आ जाती हैं तो लड़कर के अपने पति को भी मृत्यु के मुंह से भी खींच लाती हैं। हम सब देखते हैं कि स्त्रियां भी उतनी ही शक्तिशाली नहीं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, और अब हिंदी में कहूँ कि आर्टिकुलेट भी है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि, और उस तरीके से अपनी सारी चीजों को करती रहती हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं और समय के साथ आते हैं, तो हम कुछ सदी पहले अगर चलें तो अहिल्याबाई होलकर को हम देखते हैं, जिन्होंने खुद कभी पढ़ाई नहीं करी थी, पर अच्छा राज्य चलाया, अच्छा राज्य स्थापित किया, और धर्म के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। उसमें धर्म को ज्यादा महत्वता दी जाती थी, परंतु पढ़ाई उनकी जो हुई थी वो सिर्फ उनके घर के, उनके पिता के कारण थी। हमारे समाज के हर वर्ग ने ये माना कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा दी जानी चाहिए, और हर वर्ग को मिलनी चाहिए, स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए। हमारे चेयरमैन साहब जो यहाँ से आते हैं, पुणे विद्यापीठ, जिसका नाम बाद में बदल करके सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ कर दिया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने बहुत योगदान दिया महिलाओं की शिक्षा के लिए, और आधुनिक भारत के इतिहास में पहला महिला जो स्कूल था वो सावित्रीबाई फुले ने बनाया था, और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किया। तो हम ये देखते हैं कि जब ये आगे बढ़ जाती हैं तो पुरुषों से कहीं कम नहीं है, उनसे बहुत आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को भी हम नहीं भूलना चाहेंगे। अब हम आते हैं अपने संस्थान की तरफ, क्योंकि हम समय के साथ जब हम अपने संस्थान को देखते हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने ऐसा कार्य किया, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या नहीं पता होगा, तो जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोफेसर बीरबल साहनी के एक छात्र थे कुरियन जैकब, और उसी समय वो पीएचडी कर रहे थे बीरबल साहनी के निर्देशन में, और एक महिला, एक लड़की थी मुझे कहा जाए, तब तक वो उनकी शादी नहीं हुई थी, चिन्ना वर्की नाम था। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत कार्य कर रही थी, और फिर बाद में क्या हुआ, उनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद भी वो लोग साथ साथ फील्ड जाती थी, और उस समय वो राजमहल फील्ड जाती थी। समझ सकती कि राजमहल का इलाका कितना खतरनाक और कितना भीड़ था। इसके बावजूद वो दोनों लोग लाते थे, और उन्होंने बहुत सारे फॉसिल कुरियन जैकब साहब ने डिस्क्राइब किए, और उसका क्यूबिकल का कार्य जितना था वो सारा का सारा चिन्ना वर्की करती थी, जो बाद में चिन्ना जैकब के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद एक और महिला हुई ललिता वैद्यनाथन, जिन्होंने यहाँ से पीएचडी करी और टर्शरी के ऊपर पीएचडी करी, और उनका वर्क बहुत अच्छा था। इस वर्क के साथ साथ उन्होंने बाद में यहाँ से पीएचडी करने के बाद जाकर के पीटीआई ज्वाइन किया, और पीटीआई के लिए बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर थी, और काफी समय तक नेचर और साइंस के लिए भी जो न्यूज रिपोर्टिंग होती है वो हिंदुस्तान से ललिता जी करती रहती थी। हमारे यहाँ मगर में जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जब जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आया था तो उस समय कुछ लड़कियों ने ज्वाइन किया था, और ऐसा लगता था कि शायद बिल्कुल नया नया है, परंतु जब इतिहास देखा गया तो पता चला कि 1965-63 में डॉक्टर नीरजा अवस्थी छात्रा हुआ करती थी, जिन्होंने आरती मिश्रा जी के अंडर पीएचडी करी। तो छात्राएं आगे बढ़कर के किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो जियोलॉजी की फील्ड रही हो, जियोलॉजी में बहुत अच्छा कार्य किया भूतत्व विज्ञान में। और अब तो हम देख रहे हैं कितने लोग हैं यहाँ पर, और बहुत सारे छात्र हैं, चाहे वो बॉटनी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे जियोलॉजी बैकग्राउंड से, वो बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं विज्ञान के लिए। ये तो हमारे कुछ हम कह सकते हैं कि मीठा मीठा सच है, पर कड़वा सच भी है। और कड़वा सच कभी कभी ये होता है कि हम लोग गलत तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से समझते हैं। तो क्या नेचर, अगर हम नेचर को ही करने दें सारी चीजें, तो हमें शायद जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करनी पड़ेगी। जेंडर भी अपने आप इक्विलिब्रियम बना रहता है, परंतु युद्ध, जैसे कि आज भी युद्ध हो रहा है और जैसे इतिहास में भी युद्ध होता रहा, तो उसमें क्या हुआ था, पुरुष वर्ग बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था और महिलाएं रह जाती थी।
तो एक बार फिर इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता था, यानी कि पुरुष कम हो जाते थे और महिलाएं बहुत जाती होती थी, परंतु उसका सारा शिकार जो होती थी महिलाएं। और ये बात शायद आप यूं कह सकते हैं कि महाभारत काल से, तो महाभारत में भी ऐसी चीज हुई, परंतु उसका संदर्भ दूसरा था। उसको गलत तरीके से अगर पेश करा जाता तो ये कहा जाता है कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, 16,100, 16,108 पत्नियां थी, परंतु ऐसा नहीं था। वो चीज ऐसी थी, नरकासुर नाम का एक डीमन था जिसके की कब्जे में बहुत सारी स्त्रियां थी, और नरकासुर को मारने के बाद जब उन स्त्रियों को मुक्त कराया गया तो उनको समाज में एक स्थान देने के लिए ये ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सबने कृष्ण को अपना लिया, तो वो उनकी पत्नी होगी, वास्तव में वो उनकी पत्नी नहीं थी। परंतु ये कड़वा सच है हमारे पास। हम अपने इतिहास में और बाद में देखते हैं, तो चाहे वो रोमन एम्पायर रहा हो और या उसके बाद के लोग रहे, और जैसे कि हमारे काफी आक्रांता आए, मंगोल आए, उज़्बेक आए, तुर्क आए, इन लोगों ने भी जब युद्ध किया तो युद्ध में सारे के सारे लोग पुरुष पर मारे जाते थे, और सारा शिकार जो होती थी बेचारी वही महिलाएं। पर जेंडर इक्विलिब्रियम था वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता था। तो ऐसा ना हो, और आज भी जो लड़ाई हो रही है वो भी एक कड़वा सच है जो कि महिलाओं को झेलना पड़ेगा आकर के। परंतु इसके बावजूद वो अपने बच्चों को पालेंगी, पोसेंगी, और सब लोग चाहेंगे कि मतलब युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म। तो हम चाहेंगे कि नेचर या प्रकृति ने जैसा दिया है उसको ही बनाए रखें, तो अपने आप इक्विलिब्रियम रहेगा। परंतु यहाँ पर फिर से आता है कि आदमी की लालच वो इस इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम में बदल देता है। हमने जब जेनेटिक्स सीख ली, तो जेनेटिक्स सीखने के बाद खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में भ्रूण हत्याएं बहुत हो गई। वो क्यों बढ़ गई ये हम सब जानते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक कड़वा सच है। और बाद में सरकारों ने उसके लिए विधि विधान किए जिससे कि ये चीजें रुक सकें। तो हम तो चाहेंगे कि सारे लोगों में, सारी महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, सब छात्र छात्राओं में वो काबिलियत है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर के, हमारे देश के कई महिलाओं ने दुनिया के और क्षेत्रों में जाकर के, चाहे वो स्पेस हो, चाहे मैथ्स हो, हर जगह पर अपना नाम कमाया है। चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, हर जगह उन्होंने अपने परचम फहराए। तो वो सभी के सभी सक्षम हैं, और हम चाहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम बना रहे। और हम बात खत्म करने से पहले, जैसे कि शायद वन्ना जी ने भी कहा कि पुरुष दिवस भी होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ ऐसा है यहाँ भी करा जाए जिससे कि हमारे पुरुष वर्ग लोगों को भी मौका मिले। नहीं बोल रहे थे क्या? एक मई तो नहीं बोल रहे थे? नहीं। Thank you, sir. Truly, women have the power to either have positive influence or negative influence, be it in any field, family, or at work. And I urge all the women to be a positive influence. And thank you, sir, for your nice talk. And now I invite our registrar, Mr. Sandeep, to kindly share his views about women. Thank you, Pauline. Good evening to all of you. Respected Dr. Vanna, Director of BSIP, our chief guest who has joined us online, Professor Mukund Sharma, Senior Scientist BSIP, or Srimati Renu ji, who is sitting on the dais, colleagues and dear friends. So, I was going through the same dilemma which Dr. Mukund Sharma was going on ki what to speak, but finally I have made up my mind. So the key words for my discourse will be: women is the architect of the society. महिला समाज की एक कुशल वास्तुकार है. Second will be the gender neutral word. Rather than gender equality, I will say we should be gender neutral. And third, before moving on further, on a lighter note, when we were coming here, so sir said कि today we are both in blue colors. So I said, men will be men. So we can have a solace that women cannot be women, but men will be men. So
before moving on to celebrate the Men's Day, let's have some solace for this that men will be men. Why I am saying that gender neutral should be the key word for our discourse and for our thinking. Because when we talk about the gender equality, it means we are having some biases or we are having some preconceived notions about the particular gender. So my earnest request to all of you, whether men or women, we have to think in terms of gender neutral. So it may be a administrative activity, it may be a research activity, or it may be anything else. Now coming to the second part, though I have not prepared my speech, so please forgive me. So in tidbits, I would like to focus on gender neutral, but on this particular dais, because it's an International Women's Day, I would like to have some praise for the women also. So I would request everyone to focus on two spaces in their life, personal and professional life. One is their college life or university days. The second is your household, where your wife, where your the most beloved person lives. So during college days, there may be exceptions, but you people must have find कि सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है, क्लास में सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है, क्लास में सबसे अच्छा बोलता कौन है, क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स किसके आते हैं. तो सर अगर हम काउंटिंग करेंगे, मैडम अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली 10 में से 8 फीमेल्स ही होती है. So much perfection they are having. So you can think how much perfection or there may be their talent may be utilized subsequently in the coming in other spheres of life. The second part which I would like to focus is the word गृहिणी. आप जब गृहिणी शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ ऐसी चीजें समझ जाएंगे जो आप समझना नहीं चाहते हैं. कभी उनकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए. और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मतलब हमारी महिला स्टाफ हैं जो एक कुशल गृहिणी होते हुए और एक कुशल वैज्ञानिक भी हैं या प्रशासक की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी काम कर रही हैं. सो लेट अस कॉम्प्लीमेंट एंड applaud their special attributes so they can be motivated, they can be encompassed into a very gender neutral setup. So last but not least, I would like to congratulate all the women workforce working in the institute, and we seek your full cooperation and guidance and coordination in running this institute in a very successful manner. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Actually, even I didn't think in these lines, but what you said is very true that why did even we raise the matter of gender equality? Because we were gender biased. If we were not gender biased, there would not have been something to strive for gender equality in the first place. Thank you, sir, for your talk. Now I invite Mrs. Renuji, the senior most staff of our institute, to kindly express her views. Thank you for being there. मंच पे आते डायरेक्टर मैडम, प्रोफेसर मुकुंद शर्मा, रजिस्ट्रार साहब एवं सभागार में उपस्थित सभी कर्मचारी वृंद को मेरा नमस्कार. डायरेक्टर मैडम ने मेरा महिला दिवस पे कुछ बोलने के लिए कहा था. इसके लिए डायरेक्टर मैडम को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. नारी के बिना समाज अधूरा है. जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी विराजते हैं. आज मैं नारी सशक्तिकरण पर एक कविता पढ़ रही हूँ. कविता का शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ. ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ. कम करके मुझे मत आंको, कम करके मुझे मत आंको, मैं सारे जग पे भारी हूँ. ना अबला ना बेचारी हूँ,
मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जिए औरों के लिए, सदियों से जिए औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा ही हारी हूँ, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझे मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की कटारी हूँ मैं। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मन से कोमल पर ना अबला हूँ, मन से कोमल पर ना अबला हूँ, मैं अपने दम पे सबला हूँ, मैं अपने दम पे सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी दुर्गा और काली हूँ, लक्ष्मी दुर्गा और काली हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मैं अपने वाणी पे विराम देती हूँ, देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि आज के युग में नारी सब पे भारी है। धन्यवाद। Thank you. Recognizing empowerment of women in science and technology, we felicitate outstanding women who are contributing in science and technology, technological domain, the socio-economic development of women in measurable terms. And we are honored to have in our midst this afternoon as our guest speaker a very dynamic personality, Professor Hema Achyutan, whose contributions to geosciences is paramount. And before she could deliver her talk, I request the dignitaries to kindly dive. In the meanwhile, it is my pleasure to introduce our guest speaker, Professor Hemachpan, to the audience. She is born in Sri Ramam, Dikshapalli, South India, in November 1956. Dr. Hema Achkan had her initial schooling and graduation in Pune, India. She received PhD degree in geology in the year 1987 from the Deccan College, Pune University, developing a novel school in India for the reconstruction of the late Quaternary Paleo environments and monsoonal shifts to understand man-land relationship using Paleozoic and archaeological data. Her work on Paleozoic micromorphology, geochemical and isotopic studies of calcretes, laterites, and lacustrine sediments provided wholesome narratives of landscape evolution in various parts of India, of arid India. Her data on late Quaternary Holocene lake level fluctuations and Paleo-monsoon reconstructions from South India and Kashmir are being applied for climate models. Internationally, she is recognized for her seminal work and in collaboration with the Liverpool University for Human Evolutionary Studies, Cambridge University. She is excavating sites around Lake Turkana, Kenya, work which is published in Nature 2016. She has published more than 140 papers in reputed peer-reviewed journals, supervised 26 PhD students, and has co-supervised 2 international students, one from Oxford University, Dr. James Wilson, and the other from Cambridge University, Dr. Peter Griffith. He has collaborated internationally on numerous projects on quaternary geology and geoarchaeology. She is a recipient of several awards, such as the Fulbright Fellowship in the year 1995, Tamil Nadu State Award, TANSA, 1999, Junior and Senior Research Association, 3SC 2003 to 2008 and 2012 to 17, Cambridge Hamid Award from Cambridge University in 2012, La Pierre Simon Lab Place Fellowship,
in 2012 and the Women Scientist Award by the Geological Society of India in 2019. She is an editor member of the Quaternary International Journal, Anthropocene, and associate editor of Journal of the Geological Society of India. As a foreign secretary to the Geological Society of India, she has represented the Indian Geological Society at several events organized by the IUGS since 2017. She has chaired the selection board of Women Scientists Scheme under SERV since 2016 to 19 and is also the current chairman from 2022 to 24. Currently, she is working as a professor of the Institute of Ocean Management, Anna University, Chennai. We are indeed honored and privileged to listen to such a stalwart who is going to deliver a talk online on the topic Women Empowerment in Academics and Research, the Need to Mitigate Gender Disparity. Professor Hema, please. Yeah. Can you all hear me? Can you all hear me? Yes, ma'am. Hello. Hello. Yes, Yes, ma'am. yes, you are audible now. Okay. Respected Vandana Madam Ji, Dr. Mukund Sharma Ji, Dr. Sandeep Shivahire Ji, and Dr. Renuji, Senior Scientist and the Registrar of the BSIP. I'm indeed very, very happy to be here with you all this afternoon, this evening, to share the greetings for the International Women's Day program. This greeting is in the form of a bouquet to you all, men, women, children, girls, everybody. Let me sing a small hymn to you all. Mate Malaya Dvaja Pandya Sanchati Matanga Vadana Guvan Shakodari Shankari Shakodari Shankari Chamundeshwari Chandrikaladhari Taye Gauri Dada Mate. This is all for you all. You are all very empowered women in BSIP in Lucknow, and imagine how lucky you people are all that you have been born at this time, living in free India, democratic India, where you can speak your mind, but many of us don't do at the right time. But still, we have the right, we have the equanimity of mind to express ourselves. And this we should do. And we are in a very nice time period. Believe it or not, I have visited several countries, several places, rural area, both in India and abroad, and there is nothing like India. Nothing like India. You go to Africa, you see women in villages not even having proper clothes to wear, not even proper clothes to cover themselves. There is no electricity. Children cannot go to school for education. So we must be proud of ourselves, living in a free country, living in a democratic country. And we are in academics and in research. But it so happened over a generation, over a period of time, since the historical period, of course, here and there we find one or two ladies fighting for the rights in history. But majority of the women have laid their life and work only for their family and betterment of the family, serving their children. My grandmother, she lived up to 83 years old and she just looked after her 7 sons and 2 daughters. I'm sure some of your folks at home would be doing the same thing or would have done the same thing.
So today, go back to your mother, go back to your parents and thank them. Give them a hug and say how lucky you are that you have got this such a wonderful opportunity to work and be in one of the premier institutions of our country, working with one of the top class scientists, interacting with top class scientists outside your institute also. And so let me begin. Women empowerment in academics and research. Does it exist? Yes, it does exist. And there is definitely a need to understand why there is a disparity and how to mitigate this gender disparity. And what is this very word disparity? It means a difference in the level of treatment. There is a difference in the level of being unfair. Not only men also are many times treated unfair between themselves, but at the end of the day, they have a backslapping attitude. They go and have chai somewhere nearby and everything is forgotten. But this doesn't happen so easily with women. But nevertheless, there is disparity in all spheres of life. There is lack of similarity or equality, difference in age, which is again a disparity in age, disparity in rank in hierarchical context, and so on. You take every walk of life, there is disparity. Can we go to the next slide, please? Can we go to the next slide, please? Yeah. So there is always a confusion between the word disparity and diversity. And disparity is not the same as diversity. Disparity is a measure of how different organisms are when compared to one another. As an illustration, I can just tell you that in a room, if you have a coyote, which is a type of a dog, and a wolf and a collie, and in another room, if you have a bacterium, an ivy plant, and a collie, then you'll find that there is more diversity in the later room where you have the ivy plant, etc. There's much higher disparity. The species are much more different in one another. The dog, wolf, coyote are very similar. So the room containing them have a lower disparity. Now, when the continents were formed 4.5 billion years back, different continents supported a wide variety, a wide diversity of fauna, flora, all through the geological column. Some survived, some did not. And then they gave rise to different diversity over a period of time. And this period of time change took place in steps. It took place in a huge time period. Let's take up this example for another example where humans are extremely different from oak tree or a betula plant, and then they're extremely different from bacteria, earthworms, sea jellies, you name, lion, tiger, etc. But if you see in your left-hand panel, you'll find that they were bipedal, they were quadrupedal, and then eventually you see today the Homo sapiens sapien is more taller, linear, bipedal, acting, dancing in different forms. So this change just took about 3.2 million years. They have good excavation data already done on this type of change in disparity. Now, this is very, very typical. This is very, very typical in all continents, in all spheres of life, in all forms of life, etc. Next. Next, please. Now, so if you see, where did this origin of disparity come from? It is basically
a substantial problem in naturalism, in nature. The biological change that we actually observe, it involves small steps, like what I said, a change from quadrupedal to bipedal, and standing erect and walking erect and running long distances. This is all a small step, evolutionary change. So we know of no examples of rapid and large scale changes in the present biological world. If such small changes are responsible for the biological change, then to start with, one organism to get another organism from very different form of it, the original organism has to get there one small step at a time. A large number of steps would be required, and therefore, that many steps would result in many branches in evolutionary tree. And consequently, to get high disparity, diversity would have to increase first and then slowly reduce. So the general pattern in the fossil record is for high disparity to appear before high diversity. For example, if you see in one of the oldest rocks, that is the Burgess Shale, you will find that the arthropod fossil, it contains 21 non-trilobite arthropod species, which represent 20 different arthropod classes. Now, there are only 5 arthropod classes in the present and more than 1.5 species. So this tells you that even in the biological world, there is disparity, there is diversity, but diversity and then disparity they don't go together hand in hand. Next. Next, please. Next. So another example to tell you all, the time required to explain disparity, which is again a second problem. In the fossil record, it is interpreted in terms of millions of years. For example, 50 million years separate small horses that browsed on leaves to large horses that graze on grass. There's a big difference between browsing and grazing. Using the same time concept and time scale, the first animals, that is the small horses, appear only about 500 million years ago. Biological change that produced small changes in horses over 50 million years could not possibly derive this disparity between horses and invertebrate in just 9 times that time, 450 million years back. The high disparity of biological life in the present combined pattern in the fossil record is of course very well explained in our divine creation, in our traditional thinking, in our concepts, in our religious texts. So let me get, and that is also by natural evolution. Next slide. Next slide, please. Here it is. If you look up at the Shavata, the Lord who sustains the life on earth, he starts with Matsya, Kurma, Varaha, everything. Finally, the dwarf person, Rama, Krishna, Kalki, and the end of the world. And then Mahavishnu has a consort, that is Mahalakshmi, and we also religiously pray Durga, who is Shakti. There is Shakti in you, there is Shakti in me, there is Shakti in everybody. Let us bow our head to this divine form. And how is this done? She creates, she procreates. And that is why not only she procreates, but this thinking, the concept of Purusha and Prakriti came up long time back when man started settling on the river banks and looking up at and establishing an agrarian society. Believing
and trusting in all natural forms of rain, light, sunlight, fire, the earth, and so on. And therefore, procreation became the most important concept, most important thinking, because to sustain life. Otherwise, we would not have lived that long. And therefore, delineating different work, different labor to different class became the important thing for sustaining life on the earth. Next one. Next one, please. Next one. Okay. This continued right from the archaeological Paleolithic times to the River Valley civilization to Alexander the Great, 326 BC, Roman civilization, Roman Empire, Greek story. It all came down to the historical period, and you see what's happening. Even during the 350 years back, during the British time, I will show you in some of the slides where women started taking interest in geology. They had a different form. They were fully covered. But now what's happening? Disparity is so common, is so vivid, so evident that for every three or five men, there is a big distance between man and woman. But you want to bring them on the same pedestal. But how do you bring them on the same pedestal? Only when more women participate in the program, participate in competition. Otherwise, earlier, if you see, men were trampling women. Can you believe this? Men were trampling women, and now what is happening? Women are just boxing men. Not only in their work, but in their thought process, in their concepts. Men are getting really beaten up. You see, women have gone to all sorts of fraternity, right from astronaut to the deepest ocean. They've moved everywhere. They're trying to conquer everywhere. They're trying to work in all spheres of science and technology. But still, disparity continues because man still continues to gain more professional achievement than women. Women get comparatively a limited amount of salary than men. But in India, fortunately, a professor is the same all over, except for IITs and NIITs or ISAs. But a state university, the pay scale is practically the same. So you know what kind of roughly a man or a woman is getting at the end of the month as a salary component. Now, because of this, because of professional attitude, definitely there is a disparity in hierarchy, in social status, and so on. Let's move on to the next one. Next one, please. Here, I have never seen a man multitasking. It's very difficult. Of course, he does. He does gardening, mechanic, screw driving, car repairing, all those manly stuff, etc. But carrying a child, cooking, washing vessels, very, very few, one or two men who just want to help the wife. But look at the woman on the other side. She's doing everything possible. She's also many times repairing vehicles. She's also repairing cycles. She's into technology. She is into electronics. You go to an electronic company today, all the assemblage is done by very nimble hands of girls, of young ladies. She's also rearing child. This is all taking a toll on her. She should not only be awarded Nobel Prize, but she should be given much more than the Nobel Prize. But still, disparity is still there. It's very, very evident. Next. Next, please. Next, please. Yes. So gender equality in the workplace, let me just concentrate a little bit where in academics and research, it is very, very persistent.
It is just actually not a woman's issue. It's also a men's issue if you look at that. It's always, if you look at history, it is his story. You never hear of her story. Why the subject is not her story? Why only it is his story? Because he's ruled this in this land, this continent by his valor, by his physics, and the war, etc. But there have been women who have contributed in running shoulder to shoulder with men. There have been few women who have done that. Next. So let me just concentrate on this. Now, there is also gender-based inequality or disparity on the type of employment. You see the blue bars, they're all men. And if you see the red bars, they're all women. If you see them, they go quite high only in housekeeping, child rearing, restaurant, cleaning and washing, and something sundry little here and there. Maybe in a factory where they're connected with assemblage, where their soft hands can put up some small screwdrivers together, or gem cutting, jewelry designing, making some purses, stitching, factory, or fashion designing. You see stitching particularly, embroidery particularly, you see women in a high percentage. But look at the men. They are everywhere, but only in child rear, they are only 1%. This is all statistics which has been very, very, very well calculated. Their contribution comes in a big way in landscape, construction, agriculture, they beat women hollow. In factory and in many other, or driving aeroplanes, which have been all male dominated, or even in earth science, subject like earth science, they are male dominated because they work in deep mines, they go walking all over the place in the hills, glaciers, going to North Pole, South Pole, etc. Next slide. And therefore, disparity in workplace exists. And this is all because of this all causes reaction, and for every reaction, there is proactive reaction also. Now, how are you going to do that? How are you going to manage that? You can't go in both the directions at the same time. You have to work together in compromise. You have to you need to give them a proper training mindset. In the next slide, you will see. Hello, next slide. Men and women, they work, coexist together even in office space. But just as you have a delete knob in your laptop or in your keyboard, some of the unwanted things we always delete, right? So men can also, many men who are unwanted, many women who are also really not required, many women who are also really not required can be deleted. There's nothing wrong in it. There's nothing harmful. But there's another point here that many women, they work long hours. They take up their profession very, very seriously. And therefore, sometimes they need to take a break. They need to stop working, and they should also start having a social life. And therefore, gender diversity should be balanced. I'm not talking about disparity. Gender diversity in workplace should be balanced, which will cause even less amount of disparity. Next one, please. Next one, please. And therefore, if you look at some of the stories of women who have particularly worked in earth science, I'm talking about earth science more because I've read a lot about these women, and particularly since Birbal Sahni Institute of
paleosciences deal with a lot of these kind of reconstruction of the past. They deal with a lot of earth science material, like studying lakes, dendrochronology, dating, and simulations using different models, climate models, working on earth system sciences. Many women, to just look up at, just to tell you in short, if you look up historically, women have played a major role in understanding geology and working hand in hand with men, going with them out in and being in the natural world for a longer period of that time. The first lady who comes to my mind is Aethel Bennett, who was notably the first female geologist and a paleontologist. And what did they do? And you know that in England you have a lot of Cretaceous chalk. They easily picked up fossils and they became fossil collectors. And they were quite intelligent. They started giving them to different museums as a collectible material. And since chalk is not only having mega fossils, they also have microfossils. You see them working under the microscope way back in 1776 to 1845. She died in 1845. Her name is Aethel Bennett. In England, per se, has given rise to a number of women geologists, then Europe, and of course, then United States of America, and further down in Latin America. Next slide. Next slide. You have Elizabeth Cady, 1817 to 1873. She worked on mineralogy. She worked on, she was one of the wealthiest women. She worked on mineralogy, I said, and also she picked up fossils. She picked up fossils. And she was one of the earliest Royal Geological Society member. And even during right up to the First World War, I would say just after the World War, the Royal Geological Society, which is in London, they had a partition. They would conduct a weekly lecture, but they would have a partition for women to sit on other side and men on other side with a curtain, dark curtain going between them. That was the system at that time. Then you had Janet Watson, 1923 to 1985. And she was again from London. And she did a PhD program with the London Geological Society. She was the first female president of the London Geological Society during the year 1982. She has worked in great detail on the Precambrian geological formations and basement complexes. So you see, even from 1776, you had ladies working not only in mineralogy, paleontology, but also on basement rocks. Then there is another very eminent lady geologist. Next one, please. She was Marie Thorpe. 1920 to 2006, she lived very long, and she was the first oceanographer. She was the first one to discover the Atlantic Ridge, the ridge system that contributes to the tectonic movement and the theory of the plate tectonics. She was an American, but she contributed to the understanding of plate tectonics. And then, of course, you have Dr. Tanya Atwater between 1942 to present. And what is her contribution is looking up at the San Andreas fault system. She's at the University of California now, empowering women scientists. But who really touched my heart, about whom I've read a lot, is Ingae Lehmann. And she comes from Denmark, 1988 to 1993. Sorry, that's not 1988,
She's from 1888. That's by mistake. She's 1888 to 1993. Lived for 104 years. And her notable contribution has been that she discovered that the core of the earth is not as metallic or as solid as that it was really thought before, but the core is very, very liquid and there is a change in its density and specific gravity. Physicist, first, physicist with geology and as a base study. Very shy person. And if you notice one thing, that people who are very calm and quiet, they are very focused and disciplined, and they contribute a lot to the understanding of better understanding of scientific problem. And Ingae Lehmann was one such person. In India, if you look up at the scenery, I have done some preliminary work on collecting about the women geologists. There were not many. Not at all in the 1800s or in the early 1900s, or forget, even 1700s. The first lady who got her MSc Geology, 1954-55, Dr. Shalini Oak, and she was from Ferguson College. She just took up the subject for getting a degree. And it was very close to our house nearby, coming from the top Brahminical Marathi family, 1950s. Her colleague, Miss Vartak, same time, class batchmates. And then my own teacher, Mrs. Gaisas, Mrs. Sharma, Miss Gaisas, later Mrs. Sharma, also did her MSc during the late 50s. I know of one person from Lucknow University and also from Roorkee who did geology but never continued. They just moved on. They just took a degree but never continued in geology. But whereas these ladies, they not only taught geology, but at the fag end of their career, they did their PhD in Pune University, and of course, they did not produce any PhD students. The next slide. And of course, now you have Dr. Sengupta, you have several people. Hello. 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 Yeah. Can I have the next slide, please? Hello. Okay. Yeah. I will do from the Indian contribution. Yeah. Do you want me to share, or what you want me to do? Okay. Okay. I will talk through the Indian contribution. So now after we have Dr. Sengupta, who went to Antarctica, and she was the first lady to go to Antarctica, and that became a big news. And after that, we had another lady, a lady doctor, who stayed 1 year around in Antarctica from the Indian side, but not contribution to geology. We had Dr. Pandit, a lady named Dr. Pandit from NCL, but she was a microbiologist.
Much needs to be done. A lot of ladies are now coming up in a big way to take up the challenges, pose several scientific problems in earth sciences and solve them. And I now hear of Dr. Vibhuti Rai's brother, Dr. Vikram Rai, collating complete data on women geoscientists of India. And just to name a few, we have, of course, from your own, we have Birbal Sani Institute of Paleosciences, we have Vinita Padtiya, madam, we have Anjum Faruqi, of course, Dr. Vandana Prasad, who has 2 science papers published, and then we have Jyoti Srivastava, Shilpa Pandey, you name. I see all those. Nairotra, Madam Nairotra. There are all these young ladies who will come up in a big. I forget another person. Her name is Ruby Ghosh. I always look forward to reading her papers. Ruby Ghosh. These are the people. When they all take up the second, they will take up the platform and climb high. Unfortunately, in southern India, we do have a few people, but not as eminent as the people that you have here in North India. We have Dr. Manikamba, we have Kirti Srivastava. Manikamba is a pure geologist, but Kirti Srivastava is a geophysicist. We have Archana Bhattacharya, who has worked on magnetism, but applied it to solar system and so on. And of course, the big school of geology, women lady scientists coming from Ferguson and Pune University. There are a number of ladies. For example, Aditi Mukherjee, who's a mineralogist, Madam Joshi, and several others. I should not forget my own teacher, Madam Gokhale, who did her PhD in the 80s, the 1980s, same time as mine. So there would have been some problem that belated them to get their PhD degree much after their post-graduation. So they lost a lot of opportunity of going abroad, doing postdoc, coming back, taking up a very challenging job in the institute, in very reputed institute like NSES, BSIP, Vadia Institute, and so on. I forgot to mention Madam Meera Tiwari, madam. And now there is one lady named Aparna Shukla, I think so, who had a paper again in science and working on satellite imageries and GIS techniques, and also using them as a tool in a big way. Can we have the next slide? Yeah. With all this background, number of people, myself, I forgot to add myself. How can I do this? I joined Anna University in 1991, and I just have to tell you one thing: that when I went for the interview, I was only one amongst 17 men. Please understand, 17 men, and I was the only woman, lady at the time, lady to face the interview. I did not know anybody who was sitting in front of me. But the one person whom I later came to know was the vice chancellor of the university asked me, "Madam, you're coming from Pune, you have worked in Rajasthan, you have traveled on the Indo-Pakistan border, you don't seem to be afraid of anybody, but what will you do in Anna University? What will be your contribution? How you will manage? You'll be the only lady in the department." And I said, "Yes, sir, what to do? I'm the only lady because geology does not attract a lot of people, but it's a fantastic science. You are in nature. When you're doing the field work, you are with the nature, you walk the distance, you collect data from the soil, sediments, rivers, you name it. But then one thing I can assure you is that after looking at me in the department, number of girl students will join the department to do their undergraduate and postgraduate course in geology. Today, all my colleagues who are men, they have number of girl students as their PhD research scholars,
Number of MSc students, 10 men. It's not because the men don't get job. It's because the ladies have really beaten them up in the admission process. They get very good marks in BSc, come and join MSc at Anna University and continue further. So I'm sure this cartoon that you see here, do women get a fair chance at workplace? Yeah, sometimes, but not all the time and every time. Men also do not get fair chance, but they're more in a pleasing position. They're in a better position than women. Women don't get that kind of a fair chance at workplace, either in getting promotions, getting their projects through, getting their points even put forward through, even listening to their points, listening to their concepts during a meeting is also not given a fair chance. It's just that they are many times snubbed down. And so, what you need to do, very often you need to give them an online training, not only for men and women or the colleagues, but also to the hierarchical people who are in the administration. Both men and women both need to be given a training how to be receptive and how to take and listen to the people who are posing questions. In the next one. Next one, please. This cartoon is just to show you that how women are struggling everywhere. 3 men and 1 woman. Can you imagine? Can you ever imagine? This was me in Anna University. True. I had an opportunity. I'll just tell you this instance. For me, a professor is a very well-learned, well-read person. He reads and he disseminates his knowledge. But I went to my professor who was head of the department, and when I recently joined, I was always singing, paper, sir, let us put paper, let us work on this publication, da. I never went and asked anybody's personal CV. He said, madam, please sit down. I said, yes, sir. I sat down and he said, what are you? I said, sir, I am a lecturer. He said, what am I? I said, sir, you're a professor and head of the department. How many papers you have? I said, I have 21 papers, sir. Do you know how many papers I have? I said, no, sir, I don't know. He said, only 2. Can you imagine? I had a heart attack. I had a severe heart attack and I could not breathe for some time. Truly, this happened. That means he has just moved on without doing anything, without publishing. This can also happen. This also happens. In order to accommodate the youngsters moving step by step the ladder, people who have not even been able to contribute, they also need to be moved on. And this was my big shock. This was one point of a learning lesson. And this is the struggle that I went through every time. Whether it was putting up a proposal, whether I was going for an interview for my career advancement, I became practically bald. Can you believe this? I had a long hair and I practically became bald because a colleague of mine in physics department, both of us attended the same program, and in career advancement scheme, you're supposed to attend some program, a workshop or seminars, and those dates are taken into account as your to fulfill the needs for career advancement. That man, my colleague in physics department got it. Both of us had joined at the same time, but I didn't get.
and I did not get. Thinking of it every day, I lost hair. I became practically bald. My scalp would be seen because I had a professor who told me, what are you, what am I, and you have so many papers and I have no paper. Finished. Tabahi. Tamam. My life was over. But then there is some divine force. 2 years later, by 2 years I lost a lot of my hair. By 2 years later, there came a vice chancellor. He said, "What rubbish! What is this nonsense going on?" He just no interview, nothing, backdated, everything backdated. So I came up. I came up to the to what I deserved, to what I wanted, but I kept quiet. I never raised, I never made an alarm, I never raised a question against the senior professor. I just kept quiet. So it was a learning lesson for me that if you fight too much, you are the loser. You should not fight. But you can be polite and put your point politely to the opposite people so that they understand your grievance and they have empathy for you. You don't need their sympathy. You need their empathy. They should understand what you're going through. They should put themselves in your shoes and see what is going on. The next slide. Am I taking too much time? Okay. So how this disparity all over the world is measured? There is a need. You need equity issues in education, planning, quality, access, equity in the most important issues in education. All boys and girls should have an equal chance in education, equal opportunity in learning, equal opportunity in participation in any form of competition. Do all areas and all regions of the country have equal access to education? Nowadays, yes. Even the smallest of small village near the Indo-Pak border, I have seen they have very good schools. Schools are coming up in a big way. And how can we assure this? How it can be verified? So there are measuring devices for disparities. Number one, you can measure the absolute gap. You can calculate the percentage. You can calculate the ratio. You can find out the simple statistics of mean, median, percentile, quartile, and gender parity index, representation index, and so on and so forth. These are all statistical models. But mitigation should start not at the higher level where you are working in an institution, but it should start from school, college. Children everywhere, boys and girls alike, will be able to compete and complete and also complete a full course of primary schooling. You need to eliminate gender disparity in primary and secondary education, and preferably by 2030, all this should be done with. There should be levels of education no later than 2030 in all levels of education. This disparity should not be there. By 2030, we can achieve this. I know of, I've heard of Dr. Abdul Kalam, who was with us in Anna University, giving several talks saying that by 2020, another 2020, and in 2050, we should be the country in the world with the best education for every small child, and everybody's dream should come true. Next. And so, disparity is not only a phenomena existing in India, but it is also existing in the La La land of United States. And so there, the professor, male professor and the woman professor,
They would have joined on the same day, but they do not know how much each of them get in salary because they don't have a uniform UGC scale. They don't have 7th pay commission. Each university pays different salary to different people at different times. And therefore, they brought out on big, they set up a big organization for women in earth science. And this was built up in 2014, but even before that, University of Arizona, then Tucson. In Tucson, they have the Women Geoscientists Society. Judy Parrish was one such person who was heading it for some time. In different states of United States, women geoscientists particularly, they come together, share their grievances, and hold workshops regarding public speaking, negotiation to address gender disparity, in career advancement in their field, in our field, particularly in earth sciences, discussion on gendered issues surrounding communication in sciences. Science is just not done to collect dust and have a shelf life, but it needs to be disseminated to the society. People should understand what you are doing in the form of science using the public money. Talks, lunches featuring successful women in the field should be important, because then only you know what that lady has undergone to achieve whatever she has till today, where she has come from where, and that is important. Social and networking mixers are very, very, very important, and that should be the prime thing in anybody's activity. Next. So, how are you going to bring down this disparity? How men and women can be together? You need to compete, and you need to compete in large numbers. And for this purpose, all of us should write high-class scientific proposals with relevant questions. You should ask the current relevant questions. You should not go back and Google and copy what others have done. You should not salvage old proposals. That's not correct. You need to have high protocols to adopt. Present faithfully your results. Discuss your results with others and publish them in good journals. Compete healthily, which is very important. You know, I have noticed one thing. I with all these hurdles in the Department of Geology and also elsewhere. I was a director for women empowerment for 6 years. And I noticed one thing very categorically, that women are the women's worst enemies. Jealousy. Women are women's worst enemies, and men laugh at it. We give an opportunity to them to laugh. And they say, when you two women cannot get together, how do you think we can come together? So, you should nurture healthy competition. I know of people, especially ladies, they go up and talk to the higher ups, especially to another higher up lady, saying that that madam spoke XYZ about you. Now, why should that be worried case? It should not. They should not take the complaining of a person in toto at all. Probably they would have not even mentioned about it. This lady must be taking her woes to the higher up and complaining about some third person who did not even talk about it. So it is her own feeling. This happened to me. I'm telling you, I had a colleague in Deccan College, and she would go to my Guruji and talk about me, and I would feel, when did I speak this? मैंने तो कभी बात ही नहीं किया. How did this happen? But then it would be all her words, her interpretation, and her thinking, because I don't think in that format at all. So you have to be careful with whom you are nurturing friendship, with whom you are having a professional relationship. You need to have a self-discipline. That's very, very important. You need to focus, compete healthily, put forth your ideas boldly and politely. This is very important. You need to be bold.
You need to be in the right bus stop for the right bus at the right time to reach your right goal. So first, search your goal. Find out what is your goal, what you want. Find out the steps to reach the goal. Search the methodologies to reach the goal and work on. It's two-way process. It's not that you just go and get your goal randomly. You need to know and understand yourself. Self-evaluation is very important. And self-criticism is also very, very important. Criticize yourself. Find out what is the lacuna in you. Find out what are the gaps in your thinking. That is more important than pointing a finger at other person when you know that 3 fingers are pointing towards you. That's very important. Actively participate in interesting forums, workshops. And the best way to do all this is read your subject thoroughly 10 times, 15 times, so that you know your fundamentals very clearly. Be current in the topic of your subject of interest. I'm a great fan of Alexander the Great. And I would have read his story about 40, 50 times. And when I think about him, he always wanted to be known as a Greek because he had read so much about the history of, he read so much about he knew so much about the history of Greeks. But he was a Macedonian. And that was a big issue with him. Eventually, of course, he conquers Greece and so on and so forth. So, ladies, my young, beautiful ladies, sky is the limit. No disparity will exist as you will be one among your colleagues. Help each other. Help your colleagues. Empower every day yourself and your colleagues around you. Girl child. Children going to school, your people, folks at home, your relations, everybody. Next slide. Next slide. And so, empower every day. You don't need to have an international day alone to do all this and speak about gender bias, etc. Every day should be a woman's empowering day. So let us celebrate today with a promise to ourselves that we will work together to mitigate disparity if it exists in your workplace, in the subject of your research interest, and learn from examples. Keep your eyes and ears open. Have empathy with others, not sympathy. Have empathy. And first be a good listener, then posing questions. You need to be a good listener. You need to interact politely. Even for a disparity in medicine, for example, doctors, there is a big competition in health industry. There's a big competition in health insurance industry. You take any walk of life, there is disparity. Today, if we talk about 20, we are 20 to 22% only. Women in any walk of life are only 20 to 22%. And we are striving for 30%. Let us not ask all these things. The best way to do is what reach 30%. We should be more than 50%. It is our birthright. So what we need to do is compete in all fields of science, technology, economics, art, science, liberal arts, culture, etc., in a big way and compete healthily with men, because you also need them. Without them, there cannot be otherwise competition. You have competition amongst yourself, but if you want a disparity to come down, gender disparity to come down, you have to healthily compete with them. And with these few words, I want to thank Madam
Prasad ji, director of your institute, Dr. Binita Partiyal madam, my good friend, and several of my friends. I can see Anjum Faruqi, my very good friend, with whom I have worked in the field for a number of years. I thank all of you for being there in the audience, listening to me, and just sharing my thoughts on this particular topic. Thank you all once again. Namaste and Vanakkam. Thank you. Thank you, Professor Lehmann. Despite your busy schedule, I heard that you were traveling and you were also in a meeting prior to this and could join us just before at 3:30. And we appreciate you for accepting our director's invitation and giving this excellent deliberation on women empowerment academics regarding disparity and gender equality in the workplace, inequality in the workplace, and how gender diversity in the workplace should be balanced, and how both genders be given equal opportunities, and how to nurture healthy competition, and how we need to put forth our ideas boldly but politely. We are very grateful to you, ma'am. Thank you so much. Now we Thank you. proceed. Thank you so much. You're welcome. Now we proceed to the informal part of the program and celebration, and I hand over the mic to Dr. Poonam Verma for the events ahead. Thank you so much. थैंक यू कॉलिंग मैम, मंच का संचालन मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस नारी उत्सव में उपस्थित आदरणीय निदेशिका डॉक्टर वंदा प्रसाद मैडम, संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मुकुंद शर्मा सर, आज की प्रज्ञावान वक्ता प्रोफेसर हेमा मैडम, कुल सचिव महोदय शिवहरे जी, मैं अपनी और संस्थान की ओर से मेरे सभी वरिष्ठ गणों को, मेरे साथियों को आज के इस कार्यक्रम के इस भाग में मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी महिलाओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और उनके सम्मान में मैं ये प्रोग्राम का ये भाग कुछ 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जननी है वो, जीवन भी है वो, जननी है वो, जीवन भी है वो, जज्बातों पर जोर नहीं, सशक्त है और साकार भी है वो, नारी है कमजोर नहीं, दर्पण है वो, अक्स भी है वो, झुका सके नहीं ऐसा कोई शख्स नहीं है, स्वाभिमानी है वो, आत्मनिर्भर है वो, टूट के बिखरे अब वो वक्त नहीं है, टूट के बिखरे अब वो वक्त नहीं है, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी वो है पूरी, साथ है चलना, हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मंजूर नहीं है। अब तक आपने इस प्रोग्राम में नारित्व को सम्मानित करते हुए वरिष्ठ प्रज्ञावान बुजुर्गों की चर्चा और की और अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में नारी का एक परिवार, समाज, देश और विश्व की प्रगति में समुचित योगदान आवश्यक है। इसी कारण पूरी दुनिया नारी सशक्तिकरण, जेंडर इक्वालिटी का बिगुल बजा रही है, जिसके फलस्वरूप नए नए क्षेत्रों में नारी की प्रतिभा की पहचान हो रही है। आज ऐसा शायद कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ की उच्च स्थान पर नारी कार्यरत ना हो। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप अपने संस्थान में भी देख सकते हैं। हमारी वंदना प्रसाद मैडम के संचालन में की ओर अग्रसर है। मेरे विचार में नारी को उन्नत समाज की नींव की ईंट कहना गलत नहीं होगा। नारी को सृजन, पालन, परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। उसके कारण तो समाज में उसका सम्मान होता ही है और आशा करती हूँ आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन जब बात जेंडर इक्वालिटी की आती है, रैदर जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि जेंडर इक्वालिटी की जगह सर आपने क्या टर्म यूज किया, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की बात आती है, तो इसमें समाज की हर इकाई का अपना एक योगदान है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। सभी को संसाधनों और अवसरों की दृष्टि से कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
दोनों स्त्री और पुरुषों को आर्थिक भागीदारी व निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से अवसर मिले, ऐसा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो बड़े सामाजिक स्तर की बात है, बड़े सामाजिक स्तर की बात है और ये एक दूरगामी लक्ष्य है। पर व्यक्तिगत स्तर पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत कुछ हमारी हेमा मैडम ने अभी हमको बताया कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि उसमें प्रोग्राम को थोड़ा लाइटर मोड में ले जाए, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर कहना चाहूंगी कि जो है हम लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। तो कुछ धीरे धीरे करके चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, पर कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं एक आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं आशावादी हूँ और अभिलाषी भी हूँ, तो ये आग्रह कर सकती हूँ कि कम से कम सभी मिलकर परिवार में और वर्क प्लेस पर महिला पुरुष के अंतर को नजरअंदाज करके सौहार्दपूर्ण सुरक्षित माहौल बनाएं, एक दूसरे के सम्मानजनक रिश्तों से भरे स्वस्थ समाज को बनाने में योगदान दें। इस प्रकार का एक योगदान आज हम नारीत्व के उत्सव के माध्यम से भी कर रहे हैं और आशा करते हैं आगे भी करते रहेंगे। इस क्रम में आज हमारे कुछ साथी कविता पाठ गीत गायन करना चाहते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इनका मनोबल तालियों से बजाते रहें, बीच बीच तालियों से बढ़ाते रहें। सबसे पहले हम जो है पॉलिन मैडम को बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर पॉलिन जी, जो एक गीत प्रस्तुत करेंगी। इसकी मैं थोड़ा सा प्रस्तावना दे दूं कि जैसे कहा जाता है कि सामान्य तौर पर हर सफल पुरुष के पीछे एक डेडिकेटेड महिला का हाथ होता है, लेकिन आजकल के समय में ये वैसी वर्षा हो गया है, हर सफल महिला के पीछे भी किसी न किसी एक डेडिकेटेड पुरुष का हाथ होता ही है। तो उसी संदर्भ में शर्मिला जी आज कुछ गाना प्रस्तुत करेंगी। लाइट तो चली गई है, हम अगर 2 मिनट वेट कर सके तो आ जाएगी। और मेरा ख्याल है ये गाना वो अपने जीवन साथी को डेडिकेट करेंगी। तो जीवन साथी का नाम भी लाइट चेंज हुई तो पहले चलिए तो वेलकम शर्मिला मैडम। साथी आ गए। Actually, it's a very familiar song, but then since most of you know my husband, and now that we work in different places, sometimes we are near, sometimes we are far, but yet our heart goes on. So this is from Titanic, and I've already sung here once before, I guess, but this time I'm dedicating it to him. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, I hear you in my heart, and my heart will go on and on. Every night in my dream, I see you, I dream. That is how I know you go on. Far across the distance, as places between us, you have come to show you go on.
near, far, where you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you hear in my heart, and my heart will go on and on. Ooh. Love can touch just one true time, last for a lifetime, and never let go till we're gone. You, one true time, I hold you. And my life will always go on. Sing with me. Near, far, wherever I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद कॉलेज की मेलोडी सॉन्ग गाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक तो साहसी कहना चाहिए करूंगी अपनी निर्देशिका महोदय को एक छोटा सा गाना गाकर और हमारा उत्साह बढ़ाने प्लीज कोशिश करें। Thank you. This song is for to save the unborn girl child. Let's begin. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया मीठे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना मीठे अंधियारा घना और लहू से सना हिरणों के तिनके हम पर सिर चुनके अंगना मीठी बाजारे तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर
ये जुल्म की है हम सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे खिलेगा मेरा आंगना मेरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर जाने पलकों में सारे सितारे जड़ूं तेरे चूतर सतरंगी में बुलूं तेरी काजल पे मैं काली नैना भरूं तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मरूं तेरी नैनों सजा दूं नया सपना भूखी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर चली भूखी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर चली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संस्थान के एक और वैज्ञानिक डॉक्टर नीलम दास को। नीलम दास की आवाज बहुत मधुर हम सभी जानते हैं, हम लोग कई बार सुन भी चुके हैं। आज इस अवसर पर वो बुट्टीज फिल्म का एक गीत सुनाएंगी जिसे किसके बोल गुलजार जी ने लिखे हैं। नीलम जी प्लीज थोड़ा तेजी से आइए क्योंकि टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। सबको मेरा नमस्कार। बोले रे पपीहरा पपीहरा बोले रे पपीहरा नित मन कर से नित मन प्यासा नित मन प्यासा नित मन कर से बोले रे पपीहरा बोले रे पपीहरा पपीहरा बोले रे पपीहरा पलकों पर एक बूंद सजाए बैठी हूँ सुनने जाए जाए पी के देश में हर से जाए पी के देश में हर से नित मन प्यासा नित मन बुल के घर से नित मन प्यासा नित मन करते बोले पपी हरा पपी हरा बोले रे पपी हरा। थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संस्थान की यंग रिसर्च स्कॉलर मिस आर्या पांडे। मिस आर्या पांडे ने एक कविता लिखी है स्वयं से और वो उसका यहाँ पर आज रिसाइटेशन करेंगी। प्लीज इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें।
A very glorious evening to all of you and a happy Women's Day to all of us. Today, on this auspicious occasion, I am going to recite a poem, and the title is Woman. She nourishes a life. She is a wife. She is a mother and a proud daughter. She is a sister, a friend, and best companion to the end. She works hard to make her home, cooks, clean, laugh, and hide her pain. She can raise families and organization too. We call her Ma and sometimes Madam too. She is all of this, but what do we do? Complain and create a mess? Provide stress and leave her feeling depressed? Push her away and ignore her advice? Tell her she is nothing without thinking twice. Today is the celebration and we all are reciting a poem. But do we dare to casually appreciate her? Women's Day, Daughter's Day, Mother's Day, all are just simply days. But do we care about worries she faced to make best of our days? People call them sensitive and emotional. But have you ever met those women who fighting for the nation? But my definition is different. I call her strong. I call her smart. I call her caring, giving, surviving, patient, tolerant, and powerful. I call her Nari. I call her woman. And at the very last, I want to say something that we all are living in a humanist world, not a feminist one. I repeat, we all are living in a humanist world, not a feminist one. So just be a woman. Rather, trying to fit into a men's world, we must create a society where the masculine and feminine have equal roles to play because leadership and competence have no gender. Thank you and have a great day ahead. बहुत ही खूबसूरती से मिस आर्या पांडे ने एक वुमन के सभी आयामों को यहाँ पर बताया। अब मैं इसके बाद आज के इस महिला दिवस के प्रोग्राम में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि महिलाओं के साथ साथ आपने पुरुषों की भी भागीदारी देखी है। अभी 2 लोग हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बोल कर रहे हैं और अब हमारे जूनियर्स का नंबर है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे यंग रिसर्च स्कॉलर मिस्टर आशीष मिश्रा को, जो कि आज हमें मैथिली किरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता सुनाएंगे और साथ में एक गाना भी सुनाएंगे। प्लीज आशीष, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए ताकि दोस्त बना रहे। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला आपने, ये बहुत बड़ी बात है। और एक कविता जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये कविता मैंने पहली बार यूट्यूब पे एक लेक्चर सुनते हुए उसका शीर्षक मैंने सुना था और जब मैम ने बोला तो मुझे लगा कि मुझे यही कविता वहाँ पे बोलनी चाहिए। कविता है मैथिली गुप्त की। इस कविता का जो मेन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टोरी है कि भगवान बुद्ध सोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं और जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके पिता उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो हो गया, अब चलो एक बार घर पे मिल भी लो सबसे। तो कहते हैं ठीक है मैं एक दिन आऊंगा। और जिस दिन वो आने वाले होते हैं उसकी पूर्व संध्या पे उनकी पत्नी जो है वो अपनी दासी के साथ बैठ के बातें करती है। तो उसकी दासी कहती है कि अब तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपके जो पति वो चले गए थे वो आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये वो कहानी पे इस बैकग्राउंड पे मैथिली गुप्त ने जो यशोधरा का चित्रण किया है और जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये महसूस होगा कि जो त्याग तपस्या या जो बलिदान हम लोग भगवान बुद्ध में देखते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, वो सब कुछ यशोधरा के इस कविता के आगे जीरो हो जाता है। वो इतना त्याग तपस्या सब कुछ करके भी जब यशोधरा की मनोदशा और मनोचित्रण को यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो सब जीरो है। सबसे ज्यादा तो त्याग तपस्या तो यशोधरा ने की। तो मैं टाइम लेते हुए कविता को स्टार्ट करता हूँ। वो कहती है अपने दासी से, सखी वो मुझसे कहकर कहते तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वो मुझसे कहकर कहते मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं लेकिन आपके साथ जो बगल में रह रहा है आप उसी को नहीं जान पा रहे हैं। अगर एक बार मुझसे कह दिए होते तो क्या मैं रोक लेती। तो वो कहती है कि मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में।
सखी वो मुझसे कह कर स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। वो कहती कि मैं तो छात्राणी हूँ, तुमने 25 साल तक दुख नहीं देखा ना, तुम्हारे पिता ने सब व्यवस्था कर दी, तुमने कभी दुख नहीं देखा, और जब देखा तो वैराग्य हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो छात्राणी हूँ, मैंने तो बचपन से अपने पिता को, अपने भाई को युद्ध में लड़ते हुए देखा है। वो जाते हैं और उसका जीत के आते हैं, हम ही तो उनको तिलक लगा के बेचते हैं। तो कहती तुम्हारी समस्या थी कि तुमने कभी दुख नहीं देखा, और तुमने जब दुख देखा तो तुम सब चुपचाप छोड़ के सबसे मुंह छुपा के चले गए, एक बार हमसे बोले भी नहीं। तो कहती कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के काश सखी वो कहते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, इस पर विफल गर्व अब जागा। कहती कि ठीक है तुम कह रही हो कल आ रहे हैं, विश्वगुरु बन के आ रहे हैं, लेकिन हमारा भाग्य तो अभी भी अभागा ही रहा ना, क्योंकि मेरे लिए तो सिद्धार्थ गए थे, आज वो भगवान बुद्ध बन के आ रहे हैं, हम तो सिद्धार्थ को नहीं पा पाएंगे। तो कहती कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पल विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, काश वो कहते जाते, सखी वो मुझसे कहते जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। अब देखिए किस तरह से एक महिला का मतलब वो सब कुछ उलाहना उपालंब देने के बाद फिर वो आप ही के फेवर में सोचने लगती है कि हाँ ठीक है चलो कुछ सोच समझ के गए होंगे। तो वो कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, लेकिन सखी वो मुझसे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावे में सुख से, जाएं सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हो इस जन्म के दुख से। मेरे दुख से वो दुखी ना हो, बहुत नाम कमाए, बहुत ऊपर बने, विश्व गुरु बने, सबका कल्याण करें। जाएं सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हो इस जन्म के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। उपालंब मतलब उलाहना, कंप्लेन। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते, लेकिन सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कल आ ही रहे हैं, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। सिद्धार्थ बन के गए थे, आज भगवान बुद्ध बन के आ रहे हैं। गए लौट वे भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो कहते तो क्या मुझे पग बाधा ही पाते, सखी वो मुझसे कहते। और एक सॉन्ग जो मैं बहुत सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हालांकि मैं तो वो मेरे लिए उस्ताद राशिद खान साहब की मैं सुनता हूँ, यहाँ पे आप लोग मेरी आवाज में सुनेंगे शायद अच्छा ना लगे चीज है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट करें। ये सॉन्ग है आओगे जब तुम साजना अंगना फूल के, आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना मुझे खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे,
अंगना शीश ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक महिला के मन का की भावनाओं को व्यक्त किया है, उसके त्याग, उसके उलाहने में छुपे हुए उसकी त्याग की भावना को यहाँ पर बताया है। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ एक रिसर्च स्कॉलर अमित कुमार मिश्रा को, जो एक प्रेरणादायी कविता का पाठ करेंगे। इनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय निदेशक महोदया, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय उमा मैम, समस्त सम्मानित वैज्ञानिक कर्मचारीगण एवं में प्रिय छात्रों एवं में प्रिय सहपाठियों एवं छात्रों, आज के कार्यक्रम में मुझे आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं पूनम मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, संगीत हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पीवी सिंधु हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, स्वर्गीय श्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी हो, इन सभी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। और इनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कभी भी किसी भी बाधाओं में हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उसी पर आधारित मैं ये कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह रचना जो है अखिल भारतीय विद्या परिषद के द्वारा रचित है। आंधी चाहे तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। वो देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पावों के आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं जिन्हें दिखा न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे, सिर पर मंडराता काम रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमित हमारा है, बढ़ना ही काम है। हम नई चेतना की धारा, अंधियारे में उजियार, हम उस बयार के झोंके हैं, जो हर ले सबका दुख सारा। चलना मिले तो क्या, पतले अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी चाहे तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। Once again, happy Women's Day to all the ladies who present over here. Thank you so much. थैंक यू अमित।
अब इसके बाद मैं मिस वर्तिका सिंह को बुलाना चाहती हूँ। इनकी आवाज बहुत मधुर है। मिस वर्तिका सिंह। हाँ, वर्तिका सिंह जो एक गाना गाएंगी वो बहुत ही, हाँ, वो बहुत ही मार्मिक सॉन्ग था जो मैडम ने अभी गा दिया है। उसके बाद वर्तिका अपने सॉन्ग को शायद चेंज करना चाह रही है। हाँ, प्लीज प्लीज आप लोग भी गाना चाहते हैं। A very good evening to everyone, and I would like to wish a very happy Women's Day to all the women present here or not. And I would like to sing the song Ori Chiraiya, and I hope that I do justice to the song. Thank you. Ori Chiraiya, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया, मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लगो से सया, किरणों के तिनके अंबर से चमके, अंगना में फिर आ जा रे। हम पे तुझ पे हजारों सितम है यकीन, हम तुझको जहां भर के जुल्म दी, हमने सोचा नहीं तो जो उमड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिना सुनी रह जाएगी। किसके दम पे मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरे को बिसारे सितारे जन्म, तेरे छोड़ मुल्क सतरंगी बुन, तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप भरूं, तेरे नैनों गया सपना। ओरी चिड़ैया, मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वर्तिका सिंह। ये गीत इतना मार्मिक है कि जब भी इसे सुनो तो थोड़े से गूज़बम्प्स जरूर आ जाते हैं। अब मैं इसके बाद देविका देवी को बुलाना चाहूंगी जो एक रविंद्रनाथ टैगोर की कविता पाठ करेंगी। वो भी है। Welcome to India. I will be Deepika Devi, and I still have one introduction. I'm going to recite a poem written by Rabindranath Tagore. Everyone is a Tagore was a poet. He's a composer, philosopher. So once this famous poem I'm going to recite. O woman, O woman, you are not merely the handmaid of God, but also of man. These are ever-angry glowed with beauty from their heart. Poets are mediums who do all that which sets the poet inactively. Painters are giving their form ever new immortality. The sea gives its pearl, the mind a poet. The summer gardens they stars to deck you, to cover you, to make you more precious. The desire of man's heart has shared its glory over your group. You are one half woman and one half true. Right under the table. But I would like to say in one quotation, said by Rabindranath Tagore, was lacking their paddles, will not gather the beauty of the sun
इन शब्दों को मैं हिंदी में वर्णित करना चाहूंगी। उसकी पंक्तियों को तोड़कर आप उनकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं कर सकते। देविका, अब मैं बुलाना चाहती हूँ मिस ऋचा को। ऋचा जी जो है अपनी कविता में एक बच्चे के संपूर्ण विकास में माता पिता का जो अतुलनीय योगदान होता है उसके बारे में बताएंगी। वैसे इस विषय को शब्दों में बांधना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक प्रयास है। आप लोग कृपया इनका प्रोत्साहन करें। नमस्कार, मैं ऋचा यहाँ आज आप सभी के सामने माँ बाप के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। माँ बाप जो अपनी खुशियों को नजरअंदाज करते हुए अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अनगणित है उनके, यह बात तुम भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी कुचलना नहीं। मुख का निवाला दे अरे जिसने तुम्हें बड़ा किया, अमृत पिलाया तुमको, जहर उनके लिए उगलना नहीं। कितने लड़ाए लाड सब अरमान भी पूरे करो अरमान उनके, यह बात तुम भूलना नहीं। सेवा बिन सब राख है, यह सब तुम भूलना नहीं। सोकर स्वयं गीले पे तुम्हें सुलाया सूखे पे, माँ की अमीमी आंखों को भूल कर भी कभी भिगोना नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हर पल तुम्हारी राहों में, भूल कर भी उसकी राह के कटक कभी बनना नहीं। धन तो मिल जाएगा मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। पल पल पावन उनचनों की राह कभी छोड़ना नहीं। थैंक यू ऋचा जी। और मैं अपनी सहकर्मी स्वाति त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगी और इसी के साथ एक और बात कहना चाहूंगी कि इतनी सारी प्रस्तुतियों के बाद अगर किसी में और जोश आ गया हो तो प्लीज थोड़ा अंदर तैयारी कर लीजिए। स्वाति के बाद आप लोग चलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मैं कुछ पंक्तियां गाना चाहती हूँ। ये फिल्म जोर से है, जो कि दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टू वुमेन्स who having a different background, but the fate they bring them together. The one is a young widow who is struggling and who is soon trapped in the societal evils, and the other one is also doing a daunting task of saving the life of her husband. So how they met together and how their companionship built, and it helps them and it results in the redemption for the both. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मुश्किल तो क्या तो क्या ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बिखरे चलना ही है शाम छुपा के सूरज ढलना ही है जाएगी हिम्मत लाएगी हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू
कैसे रुके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वाति। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 6 बजने वाला है, बाहर नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम के इस भाग का यही समापन करना चाहूंगी। लेकिन ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा, सब लोग रिफ्रेशमेंट के बाद यहाँ वापस आके फिर से असेंबल हो सकते हैं और अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हर कार्यक्रम को समापन वोट ऑफ थैंक्स के साथ होता है, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी संस्थान की निदेशिका डॉक्टर वंदना प्रसाद जी को, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। और इसके बाद मैं अपनी और अपने संस्थान की तरफ से आज की वक्ता प्रोफेसर हेमा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज के अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में वुमेन एम्पावरमेंट इन एकेडमिक्स के बारे में बताया है। इसके बाद संस्थान के वरिष्ठतम वैज्ञानिक प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस दिन पर अपने विचारों को साझा किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे रजिस्ट्रार साहब का, जो हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन में उनका जोर शोर से उन्होंने सहयोग किया है। उनको धन्यवाद देती हूँ, उनके सेक्शन का धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ मैं संस्थान के आईसी की अध्यक्ष डॉक्टर विनीता फर्दियाल का भी थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत सहायता करी है और बहुत उनका मार्गदर्शन रहा है हम लोग को ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। इसके बाद मैं डॉक्टर शिवाली का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिसने इतना टीडियस जॉब किया, 90 फोटोग्राफ को कंपाइल करके एक पीपीटी बनाया हम लोग के लिए यहाँ पर, तो आई थैंक हर ऑल्सो। कोई भी प्रोग्राम की सफलता के पीछे बहुत सारी कमिटीज और लोगों का योगदान और सहयोग होता है। इसके लिए मैं बीएसआईपी की सभी कमिटीज को थैंक यू करना चाहूंगी, जैसे कि ऑडियो विजुअल कमेटी, गार्डन कमेटी, ऐसे सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वर्क्स एंड बिल्डिंग, सभी को अपनी और संस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने जो है वेलफेयर कमेटी और आईसी कमेटी के मेंबर्स को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग करके इसको सफल बनाया। अंत में नागरिकता के सम्मान में 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम के इस बात का समापन करती हूँ। मौन है निशब्द नहीं है, आवाज है पर बोलती नहीं है, पहल ना करे पर डरती नहीं है, जीतने की चाह नहीं पर हार मानती नहीं है। इन शब्दों के साथ हम न केवल आज ही इस प्रोग्राम को मनाएं, जैसे कि हेमा मैडम ने भी कहा और हमारे प्रोफेसर मुकुल शर्मा सर ने भी कहा, हर दिन हमें नागरिकता की इस उत्सव को मनाते रहना है और अपने सहयोगियों का, अपने साथ वालों का सहयोग करके उनको आगे बढ़ाना है, इस संस्थान को और पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बीएसआईपी लॉन में रिफ्रेशमेंट के लिए आमंत्रित करती हूँ। और अब पता नहीं बाहर जाला है या नहीं, हमें ग्रुप फोटोग्राफी करना चाह रहे थे, यहाँ पे कर ले, तो अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ पे कर ले। फिर हम एक फोटोग्राफ करना चाहेंगे सेंट्रल हॉल के सामने, और आफ्टर रिफ्रेशमेंट जो लोग यहाँ आकर असेंबल होना चाहते हैं और आगे का इनफॉर्मल सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लीज की यहाँ पर व्यवस्था है, आगे लोग भी आना चाहते हैं प्लीज। थैंक यू एक बार आप सभी को, फिर से एक बार बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।